अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैर सां हूंदो। अॼु त जीअं पहिरियां अनाउंस थी चुको हुयो त SSDP जे पेज ते तव्हांखे ख़बर पइजी चुकी हूंदी। ऐं सैटरडे ते लास्ट टाइम जॾहिं क्लास वरिती हुई त मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त जेको मंडे ते क्लास हूंदी that will not be a kind of like lecture based or something like that. That will be a mock test. ठीक है? So it will be this is the last class. अॼु जेका आहे असांजी last class आहे इंग्लिश जी। अॼु IBA जे पैटर्न ते असां हिकु mock test ठाहियो आहे तव्हांजे लाइ। उहो अॼु तव्हां जे अॻियां प्रेज़ेंट कंदासीं। ऐं ID जेका आहे उहा ज़ूम जी असांजे पेज ते आहे ॾिनल आहे त उते तव्हां ज़ूम ते जेतिरो थी सघे participate will be an interactive activity in a way के अगर तहां उनते आंसर्स कंदो because what is the pattern हाणे गाइडलाइन मां तव्हांखे ॿुधायां टेस्ट जी त कहिड़ी आहे। गाइडलाइन एक्चुअली ईअं आहे त फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड the text for you comprehension जेको अॼु असां चूज़ कयो आहे तव्हांजे लाइ। ठीकु आहे, मां उहो सम्झाईंदसि। then one by one I'll read each questions। ठीकु आहे, आंसर्स न ॿुधाईंदमि जीअं रेगुलरली असां तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं क्वेश्चन खां पोइ तव्हांखे फौरन आंसर ॿुधाए छॾींदा आहियूं। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू आंसर्स ऑन द स्पॉट। ठीकु आहे, ज़ूम में जॉइन कयो असांखे। ज़ूम ते तव्हां पंहिंजा आंसर्स ॾींदा वञो। ठीकु आहे, असांजी टीम उहे रिकॉर्ड कंदी वेंदी सभु आंसर्स। ठीकु आहे, then at the end of the test जॾहिं मां हिकु दफ़ा पूरा questions पढ़ी then Sir Shafiq will join। ठीकु आहे, Sir Shafiq join कंदा and he will read all the questions again and he'll tell you answers। ठीकु आहे, इन में इहो थींदो जो जेके बि ज़ूम में पार्टिसिपेट कंदा उन्हनि जो आफ्टर टेस्ट असांजी जेका टीम आहे SSDP जी उहा रिज़ल्ट अनाउंस कंदी फेसबुक पेज ते त कहिड़ा कहिड़ा पार्टिसिपेंट्स हुया जिनजी परफॉर्मेंस जेका हुई उहा सुठी हुई। ठीकु आहे, इन मां असांखे ख़बर पवंदी त जेको असां पढ़ायो आहे तव्हांखे अॼु ताईं इंग्लिश जे हवाले सां त उहो तव्हांखे सम्झ में आयो, केतिरी तव्हांजी इंप्रूवमेंट थी आहे। इट्स अ काइंड ऑफ पोस्ट टेस्ट। ठीकु आहे, त ट्रीटमेंट हिकु तव्हांजी थी, लर्निंग थी तव्हांजी पूरो 40 क्लासेस जेके असांजूं हलियूं आहिनि उन खां पोइ अॼु हिकु काइंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ पोस्ट टेस्ट। ठीकु आहे, त जीअं आंसर्स ख़बर तव्हांखे पवंदा आफ्टर लाइक रीडिंग क्वेश्चंस एंड देन वील डिस्कस इट। ठीक है, सो Zoom में कैसे ज्वाइन करेंगे मोहम्मद मोहसिन, व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव गिवन अ पेज ऑन आवर पेज। ठीक है, आपको वो वहां पे होगा, दिखाई दे रहा होगा SSDP का पेज है, उस पे आपको जो है वो Zoom ID और पासवर्ड दी हुई है। सो गो एंड ज्वाइन दैट। ठीक है, वो ID विझोस, पासवर्ड विझोस, ता ऑटोमेटिकली मुझी क्लास में ज्वाइन थी वेंदो। ठीक है, व्हाटएवर द आंसर्स यू आर गोइंग टू गिव अस that will be recorded after class। we'll announce के केड़ा केड़ा participants होया Zoom में असां सां गॾु ऐं उन्हनि जेको आहे कीअं उन्हनि जी पार्टिसिपेशन रही है। ठीक है, सो फेसबुक ते अगर असांखे 40 या 39 पीपल लाइक राइट नाउ 39 पीपल आर वाचिंग मी राइट नाउ ऑन फेसबुक, त अगर तव्हां ज़ूम ते असांखे ज्वाइन कंदो त दैट विल बी ग्रेट कि तव्हांजा जेके आंसर्स आहिनि उहे रिकॉर्ड थी सघंदा ऐं तव्हां जी जेका लर्निंग आहे उहा असांखे ख़बर पइजी सघंदी। ठीक है, तो वेदर व्हाटएवर वी टॉट यू इज लाइक हेल्पफुल फॉर यू, तव्हां उन मां जेको आहे उहो कुछ हासिल थियो तव्हांखे या न थियो। ठीक है, ओके, सो ओके, तव्हांजो नेटवर्क जो इशू हूंदो को मिनाहिल, दैट्स व्हाई मे बी योर Zoom ID इज नॉट वर्किंग। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। हाणे पैसेज ॾांहुं हलूं था। इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट विद Zoom, ठीक आहे, फेसबुक ते ई तव्हां असांखे ज्वाइन कयो, पर इट इज बेटर, आई वुड से दैट वुड इट इज बेस्ट कि तव्हां Zoom ते असांखे ज्वाइन कयो। ठीक आहे, तव्हांजा आंसर्स रिकॉर्ड थींदा, दैट विल बी ग्रेट। ठीक आहे, सो लेट्स मूव ऑन। पहिरियां मां पैसेज पढ़ां थी तव्हांजे लाइ एंड देन डिस्कस क्वेश्चंस। ठीक आहे, मां हिकु दफ़ा पढ़ंदी वेंदमि, आंसर्स तव्हां पंहिंजा वन बाय वन एवरी क्वेश्चन जा जेके बि आहिनि तव्हां ॾींदा वञिजो। ठीक आहे, आफ्टर रीडिंग क्वेश्चंस आई वॉन्ट टेल यू आंसर्स, सर शफीक विल जॉइन अस, then he will read again those questions for you and he will give you answers of that। ठीक है, so we'll be able to record your answers first of all कि तव्हां जी learning थी या नहीं थी। okay, so let's move on। okay, so this is the passage। it is about a dream that brought a big change। एक अहिड़ो ख्वाब जंहिंजे करे वॾो चेंज आयो, a big change। ठीक है, so let me read। पिक्चर जरूर क्लिक कजो हिन जी। ठीक है, एज आई टेल यू एवरी टाइम के पिक्चर जरूर क्लिक कजो।
What it says, Kamal was standing at the railway station. Kamal railway station te बीठो हुयो. All his classmates were getting on the train. सब उन जा classmates जेके हुया उहे train में चढ़िया पे. They were getting on the train. They were laughing and waving at him as the train left the station. उन जा जेके दोस्त हुया सब उहे क्लासमेट्स हुया उहे ट्रेन में चढ़िया पे ऐं उहे सब ॾिसी कमाल के खिली रहिया हुया ऐं उनते ईअं वेव करे रहिया हुया. जॾहिं असां हथ सां कंहिंखे ईअं इशारो कंदा आहियूं न, दैट इज वेविंग. ठीकु आहे. सो उनखे वेव करे रहिया हुया ऐं दे वर लाफिंग ऑन हिम. Kamal waved back at them but he was crying. Kamal बि हुननि खे वेव कयो उन्हनि खे ॾिसी करे. ठीकु आहे. But he was crying. हू रोई रहियो हुयो. The doctor at the school had said that Kamal was weak and unhealthy. जेको डॉक्टर आहे उन जेको आहे वो कमाल के ॾिसी चयो त डॉक्टर चयो त कमाल जेको आहे वो वीक आहे, इलाही कमज़ोर आहे ऐं अनहेल्दी आहे. ठीकु आहे. हेल्दी कोने को, he is sick. ठीकु आहे. He should not be allowed to go to Lahore, Islamabad and marry with his classmates. जेको डॉक्टर हुयो उन छा चयो त जेको कमाल आहे उनखे असां परमिशन नथा ॾेई सघूं. वी कैन नॉट लेट हिम गो विथ हिज क्लासमेट्स. उन जे क्लासमेट्स सां गॾु वञे हू लाहौर, इस्लामाबाद. दे वर गोइंग ऑन अ ट्रिप. ठीकु आहे. दे वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप ते वञी रहिया हुया. उते हुनखे अलाउ कोन कयो डॉक्टर बिकॉज़ ही वाज अनहेल्दी, ही वाज सिक, ही वाज वीक. ठीकु आहे. ओके. Maria, we have already given ID and password on SSDP page. इस वीडियो से पहले जो है वो पोस्ट शेयर की है तो आप वो चेक करें. उस पे ID पासवर्ड दोनों है. You can join us in Zoom. ठीक है. Again and again I'm telling you guys, if you have questions you can ask me on Facebook page and whatever the answers are, like if some again you have same question, I'm saying that on SSDP page we have already given you ID and password. Go for it. Join on Zoom. ठीक है. Okay. Then what is wrong with me? Now Kamal is asking, he had asked the doctor. He said, what's wrong with me? मेरे साथ क्या मसला है, क्या मतलब केड़ी परेशानी है जो आउं नथो वञी सघां. What's wrong with me? छा बुराई है इन में? You are weak. You will not be able to walk long distances and climb hills. ठीक है. So doctor said that तू जेको आहीं तू एॾा वॾा डिस्टेंस जे एॾो वॾो मुफ़ासिलो जो आहे वो पंध न करे सघंदे उते ऐं जेके पहाड़ आहिनि या जेके टकरियूं आहिनि उन्हनि ते तू चढ़ी बि न सघंदे, क्लाइम बि न करे सघंदे हिल्स ते. डॉक्टर इहो चयसि. बट आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, सेड कमाल. कमाल चयसि त पर आउं स्कूल त हमेशह वेंदो आहियां, पंध करे वेंदो आहियां. ठीकु आहे. ओके, लेट्स मूव ऑन. यस, said the doctor. डॉक्टर चयसि त हा बिल्कुलु तू वेंदो आहीं. But your house is near the school. तो जो house जेको आहे, घर जेको आहे वो स्कूल के इलाही वेझो आहे. Besides, you have a bad cough and sometimes you have fever. इन खां अलावा तोखे इलाही खंघ आहे. ठीकु आहे. बुरी खंघ आहे तोखे इलाही ऐं कॾहिं कॾहिं तोखे फीवर बि इलाही थी वेंदो आहे. How can you walk long distances and carry your bags and other things when you are not well? त तू कीअं एॾो पंधु कंदे ऐं पंहिंजा बैग्स जो असां जॾहिं टूर्स ते वेंदा आहियूं, ट्रिप्स ते वेंदा आहियूं, तो वी हैव टू कैरी अवर ओन लगेज. ठीकु आहे. असांजा जेके बैग्स आहिनि, whatever the things we have, we cannot have an other person who will carry all the luggage and bags. ठीकु आहे. We have to do it ourselves. If we can walk and we can carry our bags and all the things well, then we should decide and we should go for the trips. ठीकु आहे. But if you cannot do it, it's better not to go. Doctor इहा suggestion ॾिनसि. But why am I weak and sick? हाणे कमाल पुछेसि तो आउं छो एॾो कमज़ोर ऐं वीक आहियां. Why are all the other boys well? ॿिया सभु छोकिरा एॾा सेहतमंद छो आहिनि ऐं आउं एतिरो वीक छो आहियां? पुछे तो हाणे डॉक्टर खां कमाल. Your friends Yusuf and Najaz are also not healthy. They will also not be allowed to go, said doctor. Doctor चयसि त तुंहिंजा जेके दोस्त आहिनि यूसुफ ऐं एजाज उहे बि हेल्दी कोन्हनि के. They are also sick. त उहे बि न वेंदा ट्रिप ते. Please tell me what I should to do be well and healthy, said Kamal. हाणे कमाल पुछस त मूंखे छा करण खपे जो आउं हेल्दी हो जा ऐं माना सही हो जा या हर जाइ ते नॉर्मल माण्हुनि लाइ वञी सघां. डॉक्टर चयसि तो यू शुड टेक प्रॉपर फूड. तोखे प्रॉपर फूड खाधो खाइण खपे. ठीकु आहे. You should do physical exercises. तो exercises physical करण खपन. You should sleep early and wake up early. जल्दी सुमण खपे, जल्दी उथण खपे. You should not eat too many sweets or pan or छालिया. ठीक है.
सो तव्हां जेको आहे वो मिठा हाणे एॾो न खाओ, ठीकु आहे, पान वग़ैरह छालिया जेके बि शयूं आहिनि उहे तव्हां न खाओ। एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर योर मील, पंहिंजे खाधे खाइण खां पहिरियां ऑलवेज what we have to do, what you have to do, wash your hands, पंहिंजा हथ जेके आहिनि उहे धोयो, साफ़ कयो, ठीकु आहे। Instead you should eat fruits and vegetables, इहे गंदियूं शयूं खाइण खां, मिठाई खाइण खां, मिठियूं शयूं खाइण खां, छालिया, पान एंड जंक फूड खाइण खां, ठीकु आहे, बहितर आहे त तव्हां फ्रूट्स ऐं वेजिटेबल्स खाओ, ठीकु आहे। You should also take a bath daily and wash your hands before every meal, हर खाधो खाइण खां पहिरियां हथ धोयो, रोज तव्हांखे वेंझण खपे। These are the things can make you healthy. Also wash the fruits and vegetables before you eat them, said the doctor. जॾहिं बि ॿाहिरां कुझु वठी अचो त उनखे वॉश कयो properly and then eat them, ठीकु आहे। Please let me go to Murray, I will do what you tell me, please let me go। हाणे ॿार हूंदा आहिनि न त ॿार इलाही एक्साइटेड हूंदा आहिनि whenever the school is going for any trip or any thing, ठीकु आहे, they are very very excited for the functions and the activities whatever happened at their school. So Kamal was also excited and he said that I will do all these things whatever you said me today, but let me go to Murray and I will do whatever you said, ठीक है। So हाणे ॾिसूं था अॻियां, please he was very excited and he said please let me go, I'll manage everything. Then Kamal wake up, why are you crying, did you have a bad dream? Kamal's mother was shaking him, माना उनखे उथारे पई, जीअं माण्हू उथारींदो आहे ॿार खे, ऐं उनखे चई त कमाल उथ, रोई छो थो तूं, do you have a bad dream, छा तोखे को बुरो ख्वाब आयो? Kamal ji मां पुछो हुयो कमाल खां। Kamal opened his eyes and looked at his mother, हुन अखियूं खोलियूं पंहिंजी मां जी तरफ़ ॾिठो। Then he quickly got out of bed and said, जल्दी सां वो बेड मां उथियो, हंध मां उथियो ऐं चयईं त मदर आई विल ईट whatever you give me, जेको बि तूं मूंखे ॾींदीअ उहो आउं खाईंदसि। I know that you always tell me to eat proper food but I never listen to you, मुझे खबर है तव्हां हमेशा मूंखे चवंदा आहियो त जेको आहे प्रॉपर फूड खाओ, हेल्दी फूड खाओ, बट आई नेवर लिसन टू यू। फ्रॉम टुडे आई विल हैव एवरीथिंग, अॼु खां पोइ आउं सभु कुझु खाईंदसि, लाइक आई विल हैव मिल्क, फिश, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, जेके बि हेल्दी शयूं आहिनि उहे खाईंदसि, एंड फ्रूट्स बिकॉज़ आई वांट टू बी हेल्दी, छो जो मूंखे हेल्दी थियणो आहे, ठीकु है। I will not eat too many sweets and pan and chalia because these things make us sick and unhealthy. ये शयूं कौन खाइंदा, sweet भी कौन खाइंदा, घणो pan, chalia, all these things are not good for health. So I'm not going to eat these things to be healthy and like strong. Okay, I am happy to hear this. And you बुद्धि करे जेका कमाल जी मदर हुई ॾाढा ख़ुशि थी वई हली। Go brush your teeth, wash your hands and face। हाणे चएसि थी त ब्रश कर वञी पंहिंजे ॾंदनि खे जल्दी सां, पंहिंजा हथ धो एंड इहो पंहिंजो मुंहुं धो, फेस वॉश कर, जेको सुबुह साण सभु असीं कंदा आहियूं, ठीकु आहे। देन कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट, हाणे पोइ अच ऐं हैव योर पंहिंजो जेको नाश्तो आहे, ब्रेकफास्ट आहे, उहो खा, ठीकु आहे। यस मदर, and I will also take a bath every day before going to bed because if we remain clean and will not fall sick, ठीक है। हाणे रोज बनाई जातो त टेक बाथ एवरी डे बिफोर गोइंग बिकॉज़ अगर असां साफ सुथरा रहंदासीं त असां बीमार कोन थींदासीं, कमाल चयो इहो। And I will also play outside with my friends after I finish my homework, ऐं उन खां पोइ होमवर्क फिनिश करण खां पोइ आउं पंहिंजे फ्रेंड्स सां गॾु ॿाहिरि खेॾण बि वेंदसि, ठीकु आहे। बिकॉज़ फिजिकल एक्सरसाइज इज गुड फॉर हेल्थ, मदर like said Kamal, पंहिंजी मां खे चई त फिजिकल एक्सरसाइज जेका आहे उहा बि असांजी हेल्थ जे लाइ इलाही सुठी आहे, ठीकु आहे। Yes my son, she said, मां चयसि त हा बिल्कुलु मुंहिंजा पुट, इहो बिल्कुलु सही आहे। And continued Kamal, I will not watch too much television but will go to bed early because I want to be fresh and active when I wake up in the morning for school. And late night kona chagandas, I will not watch television, tika television medicinal sound because if I want to be fresh and active in the morning for school, so I have to avoid these things, tika. So Kamal's mother was very surprised. She was very surprised that he chati ve kedo edo paap desi chadi jo he is totally changed in the morning. When she heard him say all these things,
माना इहो सब ॿुधंदे उन जो इलाही सरप्राइज थी इलाही माना शॉक में अची वई. She did not know what had brought about this change. उनखे ख़बर न हुई त छाजे करे इहो चेंज आयो आहे. But she was very happy that he was now going to change his lifestyle in order to become a strong and healthy boy. But वो ॾाढी ख़ुश हुई because of this change now he is going to change his lifestyle and जेको lifestyle तक वो change कंदो ऐं जेको आहे सो हिकु strong ऐं healthy छोकिरो थी वेंदो आहे. ठीकु आहे. So this was the comprehension. Kamal je bare mein huyo, doctor je bare mein, and all the characters were like were there in the comprehension. ताकि खबर पइजी वई हूंदी छा मक़सद हुयो हिन जो ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं डिस्कस थियनि. ठीकु आहे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. हाणे क्वेश्चंस जेके आहिनि उन जा जेके आंसर्स आहिनि जेके बि ज़ूम में 26 पार्टिसिपेंट्स हींअर असां वटि आहिनि लाइक इंक्लूडिंग मी 25 पार्टिसिपेंट्स आहिनि राइट. सो दोज़ हू आर वाचिंग मी ऑन फेसबुक प्लीज़ जॉइन अस ऑन ज़ूम. ठीकु आहे. त जीअं असां तव्हांजा आंसर्स जेके आहिनि उहे असां रिकॉर्ड करे सघूं. ठीकु आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू. तव्हांजे लाइ जेके बि क्वेश्चंस आहिनि उहे वन बाय वन रीड कंदी वेंदसि. तव्हांखे आंसर्स न ॿुधाईंदसि. क्वेश्चन सां गॾु तव्हां ज़ूम में असांखे आंसर्स ॾींदा हलो. ठीकु आहे. ज़ूम में आंसर्स असांखे ॾींदा हलो तव्हां छो जो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस उहे तव्हांजा आंसर्स असां रिकॉर्ड कंदासीं एंड देन सर शफीक विल जॉइन एंड ही विल टेल यू आंसर्स एंड डिस्क्राइब ऑल द क्वेश्चंस. ठीकु आहे. ओके सो लेट्स मूव ऑन. टाइम वेस्ट नथा कयूं. ऐं हाणे असां मूव कयूं था क्वेश्चंस ॾे. अॼु 26 क्वेश्चंस आहिनि एंड दिस इज अ मॉक टेस्ट. इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट दैट यू कैन हैव एन IBS अकर टेस्ट. ठीकु आहे. ओके सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 सेज how many characters are there in the story. हाणे like for few seconds I'll stay on a question त जीअं तव्हां पंहिंजा आंसर्स ॾेई सघो. ठीकु आहे. पंहिंजा आंसर्स ॾेई सघो तव्हां. उन खां पोइ आउं नेक्स्ट क्वेश्चन ॾांहुं मूव कंदसि. हाणे ही पुछो त केतिरा कैरेक्टर्स हुया स्टोरी में. स्टोरी में केतिरा कैरेक्टर्स हुया जेके ज़ूम में असां सां गॾु आहिनि या जेके फेसबुक ते आहिनि त तव्हां पंहिंजा आंसर्स लिखी सघो था. ठीकु आहे. जल्दी सां आंसर्स पंहिंजा लिखंदा वञो ज़ूम में. उहे रिकॉर्ड थींदा वेंदा and then we'll move to the next questions. ठीक है. If somebody is unable to join us in Zoom, they can answer us on Facebook. ठीक है. And please do not do anything in the Zoom. टिक न कयो को भी जेको आहे सो न कयो. ऐं अगरि केरु करे थो त we'll remove that person. ठीकु आहे. कंहिं बि अगरि कुझु कयो आहे ज़ूम ते लिखण जी कोशिशि कई आहे त तव्हां हुनखे रिमूव करे छॾियो. ठीकु आहे. प्लीज़ डू नॉट डू इट. If you will do it, इलाही interruption थींदी and that is something like manners का चवंदा आहियूं न हिकिड़ी ethical तव्हांखे कल्ह जीअं उन ते सैटरडे ते मूं ॿुधायो त moral and ethical issues are more important than learning. ठीकु आहे. जेका डिग्री आहे जेका तव्हांजी पढ़ाई आहे उन खां सभिनी खां पहिरियों जेको इशू हूंदो आहे न या जेको सभिनी खां पहिरियों जेको चऊं असां इम्पोर्टेंट आहे रोल टीचर्स जो उहो इहो आहे त तव्हां हिकु इंसान हुअणु खपेव सुठा. एथिकल ऐं मोरल इशूज़ जेके तव्हांजा आहिनि न उहे बिल्कुलु सही हुजनि. मैनर्स तव्हां में हुजनि. तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त कहिड़ी ॻाल्हि सही आहे कहिड़ी ग़लति आहे. एंड देन वील गो टू द स्टडी एंड द ऑल दैट लर्निंग पार्ट. ठीकु आहे. सो डू नॉट टिक ऑन एनीथिंग छो जो स्क्रीन ते मूंखे कुझु बि न खपे. फाइन. Okay, so how many characters are there in the story? 2, 3, 4, 5. I hope you have given your answers. I'll move to the next question. Okay, now the second question says, which character is present both in the dream and after the dream? Dream में ऐं dream का पोइ कहिड़ो character हुयो जेको ॿिन्ही parts में हुयो. कमाल हुयो, मदर हुई, डॉक्टर हुयो या यूसुफ हुयो. ठीक है. Which character is present in dream and after the dream? बिन्ही में कहिड़ो कैरेक्टर हुयो. कमाल हुयो, मदर, डॉक्टर, यूसुफ, केर. ठीक है. जल्दी से आंसर्स ॾींदा वञो. Oh my God, guys, this is like I would say this is something ill-mannered शे आहे इहा. If I had said that do not write anything on Zoom, do not write anything. ठीक है. This is something that and don't use the annotations because those annotations समझ में मुझे सिंधी में नथी अचे, इंग्लिश में नथी अचे. ये त एडियो शयूं आहिनि जेके तव्हांखे ख़बर हुअणु खपनि त इहा शइ असां अगरि तव्हां लिखो था पिया त do not write anything. If someone has written something को तव्हां लिखो पाए छॾियो त हुनखे फौरन रिमूव करे छॾियो. Like again and again I won't tell you one thing
ठीक है बार बार एक शे चवंदस त तां के बुआ शे बुरी लगंदी आई मुखे भी रिपीट करवा सुठी नथी लगे सो प्लीज रिमूव इट ओके सो फेसबुक ते बिलाई सारा आंसर्स अचन पिया guys we are recording your answers so I'm not going to read all the answers today ठीक है अॼु तव्हां जा जेके आंसर्स आहिनि वे न पढ़ंदसि तव्हां जा नेम्स बि मेंशन न करे सघंदमि छो जो अॼु असां रिकॉर्ड करे रहिया आहियूं ठीक है so we'll tell you answers at the end so let's move to the next question okay question number 3 direct indirect जो आहे इहो change the following statement into indirect speech हाणे ही डायरेक्ट में ॾिनल आहे तव्हांखे हिनखे इनडायरेक्ट में चेंज करणो आहे okay so it says he says I don't want to play anymore यो चाहे डायरेक्ट आहे तव्हांखे इनखे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करणो आहे सरशफी तव्हांखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाई आहे ठीक आहे so it won't be difficult for you to change it okay write down your answers hurry up everyone facebook ते भी जेके ॾिसी रहिया आहिनि त जल्दी सां पंहिंजा आंसर्स लिखंदा वञो ठीक आहे क्वेश्चन नंबर ॾियो along with that write down option पूरो सेंटेंस लिखण में तव्हांखे इलाही टाइम लगी वेंदो so what you have to do just write down question number along with right option whether it's A B C or D ठीक है that is easy तव्हांजे लाइ बि easy थींदो इहो असांजे लाइ बि easy थींदो okay so again I am reading question जेसी तव्हांजा आंसर्स अचन question number 3 जा he says I don't want to play anymore इनके चेंज करणो आहे तव्हांखे इनडायरेक्ट में इहो डायरेक्ट स्पीच आहे ठीक आहे को बि हिकिड़ो ऑप्शन तव्हां सिलेक्ट कयो जेको तव्हांखे लगे थो त इनडायरेक्ट स्पीच उहो थी सघे थो ऐं ज़ूम में उहो आंसर असांखे ॾियो ठीक आहे ऐं फेसबुक ते बि उहो आंसर लिखो एंड देन we'll tell you answers at the end okay he says I don't want to play anymore he says that he does not want to play anymore A B he says that I do not want to play anymore C he says that I did not want to play anymore D he says that he did not want to play anymore okay so I hope के तव्हां आंसर्स सब पंहिंजा ॾिना हूंदा ठीक आहे जेके बि असां वटि आहिनि ज़ूम में पार्टिसिपेंट्स okay now we'll move to question number 4 ना मूव कंदस then we'll discuss it ठीक आहे okay now synonym of rude is हाणे similar meaning rude जी केड़ी आहे synonym जेको आहे वो rude जो केड़ो आहे rude जी छा meaning आहे ठीक आहे rude number 1 that's A clever B kind C impolite then D risky हाणे रूड जी जेका सिमिलर मीनिंग आहे सेम मीनिंग आहे सिनोनिम असां चवंदा आहियूं सेम मीनिंग के ठीक आहे सेम मीनिंग जेका रूड जी आहे उहा केड़ी आहे क्लेवर आहे काइंड आहे इम्पोलाइट आहे रिस्की आहे केड़ो आहे जी भाभी क्या कहेंगे पेट में सूर तो जिले के बुखार आ 140 के नमानी नका ओके सेम मीनिंग रूड जी केड़ी आहे क्लेवर काइंड इम्पोलाइट या रिस्की whether it's A B C or D मुझे हाने टेस्ट थी हले ओके जल्दी जल्दी सा पहना आंसर्स लिखो जेके ज़ूम में पार्टिसिपेंट्स आहिनि या जेके फेसबुक ते असां सां गॾु आहिनि ठीक आहे क्वेश्चन नंबर 4 ताईं थी वियो आहे बाबा जेके क्वेश्चन नंबर 4 पूरा मेहरबानी करे लास्ट में ॿुधाईंदासीं वी आर नॉट टेलिंग यू राइट नाउ बिकॉज़ इट्स अ टेस्ट it's not some kind of practice ठीक है that's why we are not giving answers on the spot okay now antonym of keen is keen जो antonym छा है opposite meaning छा है synonym चवंदा आहियूं असां similar meaning खे antonym चवंदा आहियूं असां opposite meaning खे ठीक है keen जी जेका है वो opposite meaning antonym छा है keen जो number 1 it's A dull B sharp C brilliant D focused E unnecessary is it dull sharp brilliant focused unnecessary छा आहे keen जो antonym चवंदा आहियूं opposite meaning खे
ठीक है जेका जिद हूंदो है न जिद जेको सिंधी में असीं चऊं जिद छा है कीन जो डल आहे शार्प आहे ब्रिलियंट आहे फोकस्ड आहे या unnecessary आहे what is it okay everybody is giving answers on Zoom and Facebook so it shows that everyone is watching us जेके भी असां खे ॾिसी रहिया आहिनि ठीक आहे they are participating very well done guys okay question number 5 I guess that's enough for it keen jo antonym छा आहे जिद छा आहे opposite छा आहे whether it's dull, sharp, brilliant, focus, unnecessary. Okay, question number 6. Question number 6. The comparative degree of little is little जी जेका comparative degree आहे हाणे adjective जो degree असां तव्हांखे पढ़ायूं हुयूं न जंहिंमें positive हुई, comparative हुई, superlative हुई त लिटिल जी जेका कंपैरेटिव डिग्री आहे उहा केड़ी आहे लिटिल जी कंपैरेटिव डिग्री केड़ी आहे whether it's lesser more lesser little or it's least question number 6 comparative degree केड़ी आहे लिटिल जी कंपैरेटिव डिग्री केड़ी आहे is it lesser, more lesser, little or least? What is it? Comparative area hai. Question number 6. Okay, Facebook te answers achan pya, Zoom te bhi achan pya. The comparative degree of little is what? Is it lesser, more lesser, littler, least? What is it? Jaldi se answers kyo sab so that we can move to question number 7. Okay. Fine. I guess that is enough. Let's move to question number 7. Now question number 7 says she was wearing dash ugly dress when she met him. हाणे यो article जो question थव options जीअं त तव्हां ॾिसी सघो था त articles जेके आहिनि उहे तव्हांखे इन में proper article तव्हांखे put करणो आहे she was wearing dash ugly dress when she met him. इते A ईंदो the B a C x or D n. Which article we are going to put in front of ugly? The ugly, a ugly, या को भी article कोन दींदासीं x सां x जेको आहे वो represent कंदो आहे zero article के जीअं असां तव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं त zero article it means we are not going to put any article before some sort of words ठीक आहे के concepts अहिड़ा आहिनि जिन जे अॻियां असां articles कोन हणंदा आहियूं so that is what zero article that represents x. Or we'll say an ugly dress when she met him. The indo, indo, x indo, ya, and indo. What we are going to put in question number 7. Okay. So we are getting answers on Facebook and on Zoom as well. So very well done, guys. This is what we have to participate when we are learning something. अगर न भी तव्हां सिखियो आहे या lectures attend न भी कया आहिनि, so this is general test. एक general test आहे यो तव्हांजी ability check करण जे लाइ whether you are able to complete English part in your test or not. ठीक है? So anyone can join us. It's not about those who have attended our lectures, जिन classes वतियूं आहिनि या lectures ॿुधा आहिनि, सिर्फ उहे attend कनि. ठीक है? This is what everyone can join us. Okay, question number 7. I hope that's done. It's all. Question number 8. Now, this says Aslam said to his mother, I'm leaving for Karachi tomorrow. हाणे ही तव्हांखे indirect में change करणो आहे. ठीक है? Aslam said, Aslam पंहिंजी mother के चयो, I am जेको आहे कराची जे लाइ सुभाणे वेंदसि. I am leaving for Karachi tomorrow. Now, look at the options.
Aslam told his mother that he was leaving for Karachi tomorrow. Aslam told his mother he was leaving for Karachi tomorrow. Aslam told his mother that he was leaving for Karachi the next day. Aslam told his mother that he would be leaving for Karachi the next day. What is it? Question number zarur do A B C D likhanda ho, we won't get like answer properly ke tahan kede question jo answer dei raha ayo. Question number zarur likho. Along with question number write down alphabet jeko option tahan ke lage to wo sahi hai. ठीक है? So this is the proper way to answer. Question number 8, I would read it again. Aslam said to his mother, I'm leaving for Karachi tomorrow. A. Aslam told his mother that he was leaving for Karachi tomorrow. Aslam told his mother that he is leaving for Karachi tomorrow. Aslam told his mother that he was leaving for Karachi the next day. Aslam told his mother he would be leaving for Karachi the next day. What is it? Question number 8 जो केड़ो आंसर सही है जेको ताके लगे तो वो ता Zoom ते भी आंसर कयो ऐं जेके Zoom ते ना जॉइन थी सगया ओए Facebook ते आंसर करना साके. Okay, so hurry up guys, be active, jaldi jaldi se answers kyo because we have limited time. So we have to complete, I have to complete all these questions and then Sir Shafiq will tell you what the answers are. ठीक है? Question number 9. हाँ, active passive जो question आई हो. His hair was cut by a professional. है ना, जैसे कि वारा हैं वे professional कटा होया. His hair was cut by a professional. Whether it's active or passive. केहड़ी voice आई है? I told you that we have two voices in English. Active voice है, passive voice है. पढ़ाए हुए हो तांके active केड़ी हुंदी है, passive केड़ी हुंदी है, केड़ी recognition आहे, केड़े नमूने सा, केड़े तरीके सा तांके identify करे सघूं था. ठीक है? So his hair was cut by a professional. यो active आहे या passive आहे? What is it? Question number 9. Everyone, question number 9. Write down your answers on Zoom and tell us on Facebook if you are unable to join us on Zoom. ठीक है? अगर ता join नथा करे सको, न करे सके आयो के reason जे करे. So give us answers on Facebook. But if you are on Zoom, so write down your answers in Zoom. ठीक है? His hair was cut by a professional. Active आहे, passive आहे? Okay, let's move to question number 10 now. हाणे preposition जो सवाल है since for जो मां ताके सैटरडे ते भी रिवीजन करायो हुयो त since किथे यूज थींदो, for किथे यूज थींदो, on किथे यूज थींदो. ठीक है? So this question is about preposition. I haven't been to the countryside dash December. छा ईंदो इते? since ईंदो, for ईंदो, on ईंदो. केड़ो आंसर ईंदो इते? Question number 9. I haven't been to the countryside dash December. Since December, for December, on December. Question number 10. I haven't been to countryside dash December. Since December, for December, on December. What we are going to put in question number 10. 10 में छाइंदो. Okay, hurry up, write down your answers, guys. Zoom में जेके join कयो आहे, उहे Zoom में answers लिखंदा वञनि. जे असांखे हींअर जॉइन कयो आहे उन्हनि खे ॿुधाए छॾियां त ही मॉक टेस्ट हली रहियो आहे असांजो. ठीकु आहे? SSDP जे पेज ते तव्हांखे ज़ूम जी ID ऐं पासवर्ड मिली वेंदो. अगरि तव्हां जॉइन नाहे कयो असांखे त तव्हां जॉइन कयो. ठीकु आहे? स्टिल वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस रिमेनिंग. प्रैक्टिस थी वेंदी तव्हांजी. इट इज़ बेटर फॉर यू. ठीक है? बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ इंग्लिश. आफ्टर दैट वी विल नॉट टेक इंग्लिश क्लासेस एनीमोर. छो जो सिलेबस खत्म थी चुको आहे एंड दिस इज द लास्ट वन, मॉक टेस्ट. उनका वो practice कंदा रहजो. That will be good for you. Okay, so answers अचन पे question number 10 जा. That's fine. If you are using Facebook, you can write down your answer on Facebook. ठीक है? If you are in Zoom, so write down and give your answer in Zoom. ठीक है? Okay, question number 10. I haven't been to the countryside dash December. Since December, for December, on December. What's the right option? What's the right option? Is it since, for, on? I guess answers dei chadya hunda taha. Let's move on to the question number 11. Okay, this is odd one out. Remember on Saturday we did some examples and I told you what is odd one out. Odd one out छा है ऐं उनखे असां कीअं कंदा आहियूं. ठीकु आहे? जिन सैटरडे जो कयो हूंदो लेक्चर अटेंड जेको मूं लास्ट टाइम तव्हांखे पढ़ायो आहे उन्हनि खे बिल्कुलु ख़बर पइजी वेंदी त ऑड वन आउट छा आहे ऐं उन में असां कहिड़ो ऑप्शन सिलेक्ट कंदासीं हिन में. ठीकु आहे? सो विच वन इज द ऑड वन आउट? ज्योमेट्री, एल्जेब्रा,
thermodynamics, calculus केड़ो आहे 11 odd one out केड़ो आहे whether it's A, B, C or D odd one out केड़ो आहे those who were on Saturday या जिनके खबर है तो odd one out आहे छा उनके कीअं सॉल्व आहे so they can do it easily अगर ताके आइडिया आहे या ता सैटरडे ते हुयो क्लास में तो you can do this question easily odd one out which one is odd one out whether it's geometry algebra thermodynamics or calculus one is it okay hurry up guys write down your answers in Zoom and Facebook तो जी ताजी participation ऐं जेका learning हुई ताजी throughout these classes we were teaching you तो वह केतरी improvement थी चुकी है ता में and like whether you are able to finish the test and pass it Amanullah, I cannot read, I cannot repeat like odd one out cha hai because this is the test day ठीक है एग्जाम जड़ी ना टीचर को कॉन्सेप्ट ता के पढ़ी या समझाइंदो कोने को बस इनमा ता के इहो बुधाए सगां थी त उहो कढणो आहे हिक ऑप्शन जेको बेन सा रिलेट नथो करे ठीक है जेको बेन सा रिलेट नथो करे बेन जे कॉन्सेप्ट सा रिलेट नथो करे जेको बिल्कुल डिफरेंट आहे वो कॉन्सेप्ट ता के नवा कढणो है ऑड वन आउट ठीक है I cannot tell you exactly के किया हुंदो है छा हुंदो है but this was the brief description जेका मां ही दई सका ठीक है okay so odd one out A B C D which one is it okay let's move to question number 12 identify the correct spelling spelling जेका है वो ताके आइडेंटिफाई करना एटिकेट जी स्पेलिंग केड़ी है करेक्ट spelling etiquette ji kedi hai whether it's A B C D which one is the right spelling guys write down question number it's very important do not write down option only ठीक है Facebook पे माने जेके भी आंसर्स ता दियो पे ओवे सिर्फ ऑप्शंस पे लिखो त इनमा असा खबर न पवंदी त केड़ो क्वेश्चन जो ता आंसर कयो है at least write down question number along with right option जेको ता समझो था whether it's A B C D ठीक है okay identify the correct spelling etiquette जी spelling क्या है right whether it's A B C or D which one is the right spelling of question number 12 question number 12 identify the correct spelling जेका सही spelling आहे etiquette जी उहा ताके identify करनी आहे okay whether it's A B C D आंसर्स जल्दी सा लिखंदा वञो okay I guess that's enough for this let's move on हाणे ही जेंडर्स अची विया नाउन जा जेंडर्स आहिन फेमिनाइन जेंडर ऑफ स्टैलियन इज हाणे फेमिनाइन जेंडर जेको आहे वो स्टैलियन जो केड़ो आहे whether it's mare cow hen or eve केड़ो आहे whether it's A B C D stallion जेको आहे उन जो फेमिनाइन जेंडर केड़ो है फेमिनाइन असा चंदा आयु माई के मैस्कुलाइन चंदा आयु असा भाई के इट मींस के जेके माई इन सेंस के फीमेल एंड मेल जेका कैटेगरी है एंड न्यूटर वो हुंदो है जेको बिनी जे लाई यूज थे ठीक है सो फेमिनाइन जेंडर ताके फाइंड आउट करणो है स्टेलियन जो केड़ो है whether it's A B C or D which one is the right answer these are the genders of noun के असा के खबर होण खपे त जेंडर जी डिफरेंशिएशन जे का असा खबर होण खपे त फेमिनाइन छा हुंदो है मैस्कुलाइन छा हुंदो है न्यूटर छा हुंदो है ठीक है so we have already taught you this is a question related to noun genders of noun ठीक है feminine gender केड़ो है स्टेलियन जो it's A B C or D okay let's move to question number 14 okay so question number 14 says after the meeting I dash with my boss हाणे ब्रैकेट में हिते स्पीक दिनल आहे तहां के
हिते सही verb जेको आहे वो पुट करणो आहे. After the meeting, I speak with my boss, I spoke with my boss, I spoken with my boss, or I speak with my boss. What is the right option? A either speak, B either spoke, C either spoken, या D either speak. What is the right option? What we are going to put in question number 14. Your tense जो आहे सवाल, ठीक है? ताके खबर हुअण खपे त कहिड़ो proper जेको आहे वो verb आहे वो ते असां पुट कंदासीं. Which like verb is like verb we are going to put here, whether it is speak, it's a spoke, spoken, or speak. Question number 14. After the meeting, I dash with my boss. I speak, I spoke, I spoken, or I speak. What is the right option? Cha option hai na jo. Okay, hurry up guys. जेके ज़ूम ते पार्टिसिपेंट्स आहिनि उहे उते आंसर्स ॾींदा हलनि, जेके फेसबुक ते असां सां गॾु आहिनि उहे फेसबुक ते आंसर्स ॾींदा हलो, त जीअं असांखे ख़बर पइजी वञे त जेका एॾी असां महिनत कई तव्हांजे लाइ उन मां तव्हां कुझु सिखियो, का तव्हांखे उन मां फैज़ हासिल थियो या न थियो. Okay, after the meeting, I speak with my boss, spoke with my boss, spoken with my boss, or speak with my boss. What is the right option? Okay, let's move to 15.1. His pants dash torn during the match. हाणे यो छा आहे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आहे, तव्हांखे सर पढ़ायो हुयो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, त कहिड़े सब्जेक्ट सां गॾु कहिड़ो वर्ब ईंदो, सब्जेक्ट ऐं वर्ब जे विच में एग्रीमेंट हुअण ज़रूरी आहे. जेको सब्जेक्ट आहे उन जे अकॉर्डिंगली असां वर्ब यूज कंदा आहियूं, ठीकु आहे. सो हिज पैंट्स was torn during the match, his pants is torn during the match, his pants were torn during the match, his pants are torn during the match. What is the right option? 15 jo was indo, is indo, were ya are. His pants was, his pants is, his pants were, his pants are. Chaindo. Question number 15. What is the right option? Subject verb agreement. Subject sa kedo verb agree kando, kedo na kando. Like this is very very important. We should know ke keda subject sign jin sa asa singular verb janandasi, kedan sa asa plural verb janandasi. Question number 15. His pants dash torn during the match. Was, is, were, are. What is the right option? Okay, let's move to question number 16 now. This was about subject verb agreement. 15 में was indo, is indo, were indo, are indo. What was the right option? Tika, let's move to question number 16. Again, this is direct and indirect. I said to him, why don't you work hard? I said to him, why don't you work hard? Question of option number 1 है A. I asked him, why didn't you work hard? B. I asked him why he didn't work hard. C. I asked him why he wouldn't work hard. D. I asked him why he wasn't working hard. Kehdo right option is 16 jo. This is again direct indirect. I said to him, why don't you work hard? Your direct है, ताकि indirect में change करना है ना sentence के, so you have to choose one option, whether it's A, B, C, or D. Read these options properly, carefully, and then answer us. ठीक है? 16 जो केड़ो answer है? I said to him, why don't you work hard? A. I asked him why didn't you work hard. B. I asked him why didn't he work hard. C. I asked him why he wouldn't work hard. D. I asked him why he wasn't working hard. What is the right option of question number 16? यो direct है, ताकि indirect में ने change करना है, ठीक है? So
This is again very easy. We have already taught you direct indirect छा हूंदा आहिनि, असां direct मां indirect में कीअं change कंदा आहियूं, ठीक आहे? So this is very easy and I hope that everyone is able to do this, ठीक है? Okay, so answers will achieve in question number 16 ja. I guess we have to move to question number 17. So the post are ताकि one by one very question review कराएंगे, so it will take a lot of time, ठीक है? Fine. Now again active passive. I ate a piece of chocolate cake. Is it active or passive? I ate a piece of chocolate cake. You active आहे या passive आहे? Very easy. जिन active passive पढ़े हुआ है या जिन lecture attend किए हुए हो, they can easily do it. They can easily identify के you active जो question answer आहे statement या passive जो statement आहे. What is it? Question number 17. I ate a piece of chocolate. I ate a piece of chocolate cake. Is it active or passive? What is it? A lot of people are giving answers on Facebook. Same on Zoom as well. So very well done everyone. तानी participation बुधाई थी तो like we are quite successful in our objective. जेको असां जो aim हुयो उनमें असां काफी हद ताईं successful थी चुका आहियूं. Like a lot of people are there with us. Question number 17. I ate a piece of chocolate cake. Is it active or passive? What is it? Identify करना है केडी voice है या active voice है या passive voice है. जल्दी से answers लिखंदा वञो. It's a kind of competition. जेतिरो जल्दी answers लिखंदो, that will be easy for us and that will be great for you. Okay, I ate a piece of chocolate cake. Active, passive. Question number 17. It was. Now let's move to 18. He has a strange hobby. Strange meaning छा है? हिते strange जेको आहे वो केड़े sense में use कियो वियो आहे? Particular or unusual? Whether it's particular or unusual. He has a strange hobby. हुनजी हिकु particular hobby आहे. Strange means what? It's a kind of like question असां कहंदा synonym आहे इहो. Strange जेको आहे वो हिते कहिड़े सेंस में यूज कयो वियो आहे, उनजी हिते छा पई बीहे, particular पई बीहे या unusual पई बीहे. What is the meaning of strange in this sentence? कहिड़ो strange जेको आहे वो सेंस दे पियो इन सेंटेंस में. Is it particular or it is unusual? He has a strange hobby. What is it? कहिड़ो right option आहे इन जो? Question number 18. It is synonym. Strange meaning find out तांखे करणी आहे त sentence में जेको आहे वो strange कीअं यूज थियल आहे, कहिड़ी meaning ॾे पियो. Strange particular आहे या unusual आहे? What is the right option? He has a strange hobby. Particular hobby तसका या unusual hobby तसका? What is the right answer? Okay, hurry up guys. जल्दी से answers कयो. जल्दी से आंसर्स कयो त जी अॻियां मूव कयूं नेक्स्ट क्वेश्चन जे लाइ. एवरीवन इज गिविंग आंसर्स ऑन फेसबुक एंड ज़ूम. अच्छा, अगर ज़ूम ते डिस्कनेक्ट थी था वञो त को मसलो कोने को, तव्हां वरी कनेक्ट करण जी कोशिश कयो, पर अगर न त फेसबुक ते कंटिन्यू कयो तव्हां, को मसलो कोने, ठीक आहे, बट टेस्ट पूरो कंप्लीट कयो. ओके, ज़ाहिर क्लासेस असां कंप्लीट करे चुका आहियूं. अगर तव्हां वठण चाहियो था त उहे रिकॉर्डेड आहिनि असांजे SSDP जे पेज ते, ठीक आहे, त तव्हां उहे वन बाय वन तव्हां क्लास 1 खां स्टार्ट कंदव त लाइक वी हैव कंप्लीटेड आई गेस 38 क्लासेस टिल टुडे. सो उहे तव्हांखे सभु मिली वेंदियूं. यूट्यूब जो बि पेज आहे असांजो, ठीक आहे, उहो लिंक बि असांजे पेज ते ज़रूर ॾिनल हूंदो, त उन ते तव्हांखे रिकॉर्डेड जेके बि लेक्चर्स आहिनि उहे मिली वेंदा तव्हांखे, ठीक आहे. Okay, so strange, particular, unusual. I guess everybody has given their answers. Let's move to the next one. Again, direct, indirect. The teacher said to the boys, "Do not make a noise." Teacher said, the teacher said to the boys, "Do not make noise." Direct है, ताकि indirect में change करना है. A, the teacher ordered the boys not to make a noise. The teacher asked the boys not to make a noise. The teacher ordered the boys to not make a noise.
D, the teacher said to the boys not to make a noise. केड़ो right option आहे? केड़ो right option आहे? The teacher said to the boys do not make a noise. इनके जरिए असां indirect में change कंदासीं तो what would be the right answer? Is it A, B, C? Options के सही तरह से पढ़ो and then go for the right option. ठीक है? Question number 19 है यो. Question number 19. ठीक है? What is the right option? Is it A, B, C, D? हाने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो ऑप्शंस हुंदा आहिनि उन्हनि खे चङी तरह सां तव्हांखे पढ़ंदो त जीअं तव्हां खां का बि शइ मिस न थी वञे जेके रूल्स आहिनि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा उहे तव्हांखे ख़बर हुअण खपनि अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू हैव टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट ठीक आहे त उन में जेके बि वर्ड्स आहिनि उन में के कॉन्सेप्ट अहिड़ा आहिनि उन में इंग्लिश में बि जिन खे असांखे थोरो रटो हणणो पवंदो आहे क्रेमिंग करणी पवंदी आहे सो ॿारनि वांगुरु उनखे थोड़ो रटो हणो पवंदो रूल्स वगैरह के समझण जे लाइ ग्रामेटिकल जेके शयूं आहिनि ठीक है बाकी हिक दफ़ा समझी वियो त इट विल बी इजी फॉर यू टू चेंज इट एंड टू यूज इट फॉर राइटिंग इन योर वर्बल लाइक स्पीकिंग ठीक है the teacher said to the boys do not make a noise which option is correct question number 19 A B C D ये गूगल सारे का गूगल कहने जाओ okay let's move to question number 20. Her house is enormous. Again, synonym, similar meaning. Enormous जेका है उन जी meaning केड़ी आहे हिन sentence में? According to this sentence, what is the meaning of enormous? Is it huge, messed? Is it huge or messed? Her house is enormous. What is the meaning of enormous here? छा synonym आहे? Similar meaning केड़ी आहे? वॾो, huge, messed. What is the right meaning? What is the right option? Question number 20. Only we have six questions remaining. ठीक है 6 questions remaining हैं. 26 questions होया अदीजा ठीक है. So we have completed 20 right now. Only 6 are remaining. After 6 questions ठीक है complete करने का पोइ 26 सचफी तांगे join कंदा. He will tell you answers of each question. ठीक है हिक question जो right now I'm not telling you because we really want to know that how much you have कितरो तांजो improvement थी चुकी है how much you have improved from our lectures and जेको असांजो objective हुयो जेको aim हुयो असांजो छा असां उन में उहो असां fulfill करे सघियासीं या न करे सघियासीं her house is enormous huge आहे या messed आहे what is the right option question number 20 okay I guess everybody has given answers let's move to question number 21 and antonym of dismay is dismay जी जेका opposite meaning आहे जिद जेको आहे dismay जो वो केड़ो आहे what is the right antonym of dismay dismay जो right जिद आहे वो केड़ो आहे it's intimidate mitigate then we have soothe and then we have harden ठीक है and mystify that mystify ठीक है केड़ो ऑप्शन dismay जो opposite आहे जिद आहे is it A intimidate then we have B mitigate then we have C that's soothe and then we have D harden and E mystify what is the right option? What is the right opposite of dismay dismay जो opposite केड़ो आहे antonym केड़ो आहे जिद केड़ो आहे ठीक है ये तो बिल्कुल इजी वर्ड्स आहिनि जेके हाणे तव्हांखे बिल्कुल समझ में अचण खपनि त synonym जी मीनिंग छा हूंदी आहे antonym जी मीनिंग छा हूंदी आहे ठीक आहे छो जो इहे वर्ड्स तव्हांजे पेपर में एज अ क्वेश्चन तौर ॾिनल हूंदा तव्हांखे ख़बर हुजे त antonym असां ज़िद खे चवंदा आहियूं जेका अपोजिट मीनिंग हूंदी आहे डिफरेंट मीनिंग हूंदी आहे ठीक आहे synonym जेका आहे दैट इज कॉल्ड सिमिलर सेम मीनिंग ठीक आहे सो दिस इज व्हाट दिस इज antonym जिद dismay जो केड़ो आहे okay let's move on question number 22 it says again your antonym जो question आहे जिद त बुधाइणो आहे ताके poverty जेको आहे उन जो जिद छा आहे जल्दी guilty cold or idle what is the antonym opposite केड़ो आहे opposite word जेको आहे वो poverty जो केड़ो आहे
ठीक है। अपोजिट वर्ड जो है पॉवर्टी जो वो केड़ो है, पॉवर्टी चंदा आहियूं असीं गुरबत के, ठीक है। वो हेल्दी है, गिल्टी है, कोल्ड है या बका तो लिख दे। हां ना मैं तो वेल थी पर के नौ ठान दिला फार्म भरन थी। अच्छा तो कल चाहम बड़ी मेहनत हुई है ना ना ana khabar ना ना अदा बैकग्राउंड में मेहरबानी करे तो वॉइस के म्यूट कयो। ताकि सिर्फ लिखनो है, तो डायरेक्ट आंसर देनो है थ्रू टेक्स्ट मैसेज में। तहां के गलहाणी की जरूरत है न, वरी तहां बैकग्राउंड में वो आवाज कयो। ओके टेक्स्ट के डिस्टर्ब न कयो, मेहरबानी करे तहां म्यूट कयो। अच्छा ज़ूम में आई डोंट नो वेदर न जो आवाज अचे पियो या न पियो अचे। जेके ज़ूम में अगर गलाए रहियो आहे केर त तहां प्लीज पेंजो माइक जो है वो बंद करे छडियो। डिस्टर्बेंस थे थी इलाही। ताके मां पहले ही चयो हुयो त कुछ भी तहां स्क्रीन ते लिखो न ऐं तहां गलायो न, छो जो डिस्टर्बेंस थे थी इलाही एंड उन जो इलाही बुरो इम्पैक्ट पवे थो। सो वी ऑल आर अडल्ट्स, असीं सब वडा आहियूं, नंढड़ो केर भी कोने ते ॿार जेके समझाइजे त बाबा तहां आवाज न कढो, टेस्ट तो हले पियो, ठीक है। So this is very immoral and unethical thing, ठीक है। So avoid it. Antonym, I guess everybody has given answers. I don't know who is talking really, like if someone is talking in Zoom, please now with the mic band kare chhadiyo, because this is creating a lot of disturbance. Those who are listening and they are on Facebook, उनन के लाइ disturbance थे पे। Zoom में भी जेके हुंदा उनन के disturbance थींदी हुंदी। Test जो जेको criteria यो हुयो तो you are not going to write anything on the screen and you are going to say like nothing during the test. हाँ प्लीज पे जो माइक जो है वो बंद करे छडियो। Okay, so let's move to 23. There is a bridge, dash the river. Again, preposition, through the bridge, through the river, outside the river, across the river. I know it's very disturbing if someone is talking during Zoom meeting. Jeko, like, I'm reading all the questions. You are not supposed to say anything or you are not supposed to make noise. तहां पेजा आंसर्स टाइप कयो ऐं उते दियो, ठीक है। जेके फेसबुक ते असां सां गदा आहिनि, अनफॉर्चुनेटली गाइस वी वोंट बी एबल टू like include your answers. जेके Zoom में असां के आंसर कन पिया, असां सिर्फ ऐं सिर्फ उन्हनि जी पार्टिसिपेशन के वैलिड समझंदासीं ऐं उन्हनि जो ही रिजल्ट्स ॿुधाए सघंदासीं। बाक़ी जेके फेसबुक ते आहिनि उन्हनि जो रिजल्ट असीं न ॿुधाए सघंदासीं, बिकॉज़ इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर अस। Zoom ते जेके 29 पार्टिसिपेंट्स आहिनि राइट नाउ, 28 आई गेस, सो उन्हनि जो रिजल्ट असां आफ्टर टेस्ट तव्हांखे अनाउंस कंदासीं। दोज हू आर पार्टिसिपेटिंग ऑन फेसबुक उन्हनि जो असां कोन करे सघंदासीं, ठीक आहे। So this is what we cannot do. Okay, so 23, there is a bridge, dash the river, throw, outside, across. Which preposition is the right one? Through the river, outside the river, across the river. Okay, we have already told you, but somehow like जेके स्टूडेंट्स असां के जॉइन न करे सघिया Zoom में, प्रॉब्लम हुई कुछ उन्हनि जे इंटरनेट में, and they said we cannot join on Zoom. so उन्हनि के मां चयो त do not miss test, तव्हां फेसबुक ते जॉइन कयो, पर रिजल्ट उन्हनि जो ही अनाउंस थींदो जेके Zoom ते आंसर्स करे रहिया आहिनि, ठीक आहे। ओके, क्वेश्चन नंबर 24. My friend has been living in Canada dash 2 years, for 2 years, since 2 years. Chaindo kedo preposition indo ite. My friend has been living in Canada since 2 years, for 2 years. अच्छा Zoom में I don't know को प्रॉब्लम थी सके तो, but this is what we can do के रिजल्ट उन्हनि जो अनाउंस थींदो जेके Zoom ते आहिनि, ठीक है।
बट इहा भी त पार्टिसिपेशन है ना, त तहां आफ्टर टेस्ट पंहिंजो जेको रिजल्ट आहे उहो पाण चेक करे सघो था कि तहां कहिड़ा कहिड़ा क्वेश्चंस जेको या उन्हनि जा कहिड़ा कहिड़ा आंसर्स तहां ॾिना आहिनि, त इन में सेल्फ असेसमेंट भी थी सघे थी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तहांजो जेको आहे सो असेसमेंट केर ॿियो करे, यू कैन असेस योर सेल्फ, तहां पंहिंजी असेसमेंट पाण भी करे सघो था कि तहां पाण सेटिस्फाई आहियो त तहां केतिरा क्वेश्चंस जा आंसर्स ॾिना आहिनि, केतिरा सही तहां ॾिना आहिनि, ठीकु आहे। सो दिस इज नॉट since this is not something that we should like worry for it, ठीक है। so it's something के पंहिंजी जेका असेसमेंट आहे उहा तव्हां पाण कयो। चवंदा आहिनि न त असां जॾहिं पाण पंहिंजी असेसमेंट कंदा आहियूं त उहा वधीक बहितर हूंदी आहे, ॿियो क्रिटिसाइज़ कंदो आहे या रिज़ल्ट ॿुधाईंदो आहे। सो दिस इज समथिंग असां उन ते थोरा डिप्रेस थी वेंदा आहियूं, पाण कंदा आहियूं न त असां पंहिंजे पाण खे उन में फाइंड आउट कंदा आहियूं त कहिड़ियूं असांजो मिस्टेक्स आहिनि, कहिड़ियूं एरियाज़ आहिनि जिते असांखे इम्प्रूवमेंट जी ज़रूरत आहे, ठीकु आहे। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आई एम रीडिंग फॉर यू। माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कनाडा dash 2 years, since 2 years or for 2 years. What is the right option, guys? Hurry up, jaldi se answers do. Only we have 2 more questions now. After that I'll leave and like Shafiq will join me and will tell you answers, and after the test we'll announce the result of those who have joined us on Zoom. Theek hai? Let's move to question number 25. Plural of datum is, what is the plural of, हाणे ते अची वियो singular plural, ठीक है। datum जेको आहे उन जो plural छा आहे? datas, data, datums or datum? What is the plural? What is the plural of datum? datas, datas, data, datums or datum? A, B, C, D. What is the right option? Hurry up guys, जल्दी सा आंसर्स कयो Zoom में ऐं Facebook ते, त जीअं असां तव्हांजी असेसमेंट करे सघूं, असांखे ख़बर पइजी सघे त केतिरी इम्प्रूवमेंट तव्हां में थी आहे। असांजो जेको एॾी असांजी महिनत हुई जेका असांजी SSDP जी टीम जी, उहा कुझु कमु करे सघी या न करे सघी, ज़ाया त न वई। पर जेतिरो रिस्पॉन्स अचे थो पियो, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि सभु रिस्पॉन्स कनि पिया ऐं आंसर्स भी जेके आहिनि उहे मोस्टली सभु सही आंसर्स कनि पिया। सो आई एम वेरी लाइक हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी दैट। Okay, question number 25. Plural of datum is what? It is datas, data, datums or datum. What is it? Hurry up guys, जल्दी से आंसर कयो। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॾे वॾे लेवल ताईं माण्हू पुॼी वेंदा आहिनि न, उहे आंसर जेको हूंदा आहिनि उनखे प्रॉपर ॾियण न आहे ईंदो, उनजे करे बि टेस्ट में तव्हांजूं मार्क्स घटि थी वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। सो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर ॾियो अलॉन्ग विद ऑप्शन, राइट ऑप्शन जेको तव्हां सम्झो था, ठीकु आहे। सो 25 फॉर एग्जाम्पल इट्स A, B, C, D, तो you have to write down number लिखें आप, and then along with number you have to write down what? option भी लिखें उसका। Okay, I guess this is enough for 25. Now move to 26. हाणे वरी odd one out अची वियो अथव। This is very very interesting. मूंखे त ॾाढो वणंदो आहे odd one and out, जंहिंमें असांखे फाइंड आउट करणो हूंदो आहे, कॉन्सेप्ट खे सम्झण जी असांखे ज़रूरत आहे। Which one is different? हाणे ॿुधायो डिफरेंट कहिड़ो आहे? Somebody was asking me odd one and out, what is the meaning, and थोड़ा समझाते हैं आप हमें। So जो डिफरेंट होगा उसको हमने सर्कल करना है। We have to circle the one जो बाकी कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करता, डिफरेंट है। So what is different here? Carpet, picture, rug or welcome mat? A is carpet, B is picture, C is rug, D is welcome mat. What is the difference? केड़ो आहे 26 जो? Hurry up guys. What is the right option? Which one is different? Carpet, picture, rug, welcome mat. Which one is? Okay. So this was all from my side, Thika. This is the last class. We won't join you from tomorrow. And I hope that whatever I taught you or my co-teacher Shafiq, we both taught you, that was useful for you, Thika. So and you can be in touch in the WhatsApp group and Facebook, tika agar taake kabhi suggestion aaye English ji, agar kabhi problem aaye, we'll be available there, asa taake answers kanda rahandasi, tika WhatsApp group te, Facebook te। live session jo jeko marhalo huyo ya jeko bhi asan jo silsilo huyo wo aje khatam the to hite, tika hai। subhane ka classes na hundiyu English ju। I hope जेको मुखे आयो पे मां ताके समझाए चुकी आया, पढ़ाई चुकी आया, and you enjoyed my teaching from my side, tika। Okay, thank you very much guys। Now Sir Shafiq will join you। All the best for your test everyone। Okay, so Allah Hafiz from my side। Question and answer।
जो आवाज अचे चेक जस्ट अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. तां सब ठीक हूंदा। जीअं त तव्हांजो मॉक टेस्ट आहे इंग्लिश जो मिस वक्तावर तव्हां सां डिस्कस कयो पूरो डिटेल में पैसेज ऐं उन जा क्वेश्चंस हाणे वराए हिकु दफ़ा मां क्वेश्चंस तव्हां सां गॾु पढ़ंदुसि and then I will discuss at the end all the answers. So now let's start. Questions. Okay. ऐं सब खां पहिरियों इहा ॻाल्हि तव्हां सां डिस्कस कंदा हलूं त जीअं तव्हांजी लास्ट क्लास थी चुकी आहे इंग्लिश जी अॼु असांजो आहे मॉक टेस्ट सो बी केयरफुल ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त स्क्रीन ते कुझु न लिखो त बहितर थींदो ऐं जेके पार्टिसिपेंट जेके एस्पायरेंट्स आंसर्स ज़ूम जे ज़रिए लिखनि था असां उनजो रिज़ल्ट बि इंशाअल्लाह शाम जो अनाउंस कंदासीं ऐं तव्हांखे का बि डिफिकल्टी आहे तव्हां ग्रुप में ऐं पेज ते लिखी सघो था वी विल आंसर योर क्वेरीज क्वेश्चन नंबर 1 हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी A 2 B 3 C 4 D 5 इहो है क्वेश्चन नंबर 1 मां सब क्वेश्चंस तव्हां सां गॾु डिस्कस कंदसि ऐं एट द एंड आई विल डिस्कस आंसर्स क्वेश्चन नंबर 2 which character is present both in the dream and after the dream वो कैरेक्टर आहे जेको ड्रीम में प्रेजेंट हो ड्रीम खां पोइ बि असां ये डिस्कस करे चुका आहियूं पहिरियों बि प्लीज डोंट राइट इन दिस स्क्रीन कुछ शेयर न कर ज़ूम में Number 3, change the following statement into indirect speech. असां direct indirect भी discuss कयो डिटेल में ऐं उन जा आंसर्स आहिनि त he says I don't want to play anymore. हाणे तव्हां हिते फोकस रखजो त तव्हांजो रिपोर्टिंग वर्क कहिड़ो आहे there are 4 options and the one answer is correct. Write down. अच्छा कमेंट में जॾहिं तव्हां आंसर लिखो था त क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज 3 जो बी आहे ए आहे तव्हां ज़रूर लिखो 3A B या C. Then we will consider your answers. Question number 4 is synonym of rude is A clever, B kind, C impolite, D risky. हाँ synonym जी vocabulary तमाम important आहे synonym preposition तो rude जो synonym similar word केड़ो है Number 4 antonym of keen is antonym चो या opposite चो गाल सागी है so there are lots of options A dull, B sharp, C brilliant, D focused, E unnecessary. Next 6 the adjective में degrees of adjective पढ़ी हुई ऐं तव्हांखे सब याद हुजनि इन रूल्स हाँ हिकड़ी डिग्री आहे the comparative degree of little is literally तव्हांखे comparative degree लिखणी आहे A lesser, B more lesser, C littler, D least. हाँ वरी भी के स्क्रीन पे कुछ लिखियो आहे ज़ूम जे ते so please I request to all of you not to do these things ताकि कुछ मैनर्स भी ॾियण घुरिजनि that असां एॾी तयारी करे ते अचूं न we are learning तव्हांजे कॉन्सेप्ट जेके तव्हांजे फ़ाइदे करे ऐं तव्हां जॾहिं इहा शइ कंदो that's not good ultimately we have to remove you question number 7 she was wearing dash ugly dress when she met him आर्टिकल भी तव्हां पढ़िया the A में आहे the B A C माना zero article no article D N Question number 8 Aslam said to his mother I am leaving for Karachi tomorrow हाँ इहो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आहे तव्हांखे इहो इनडायरेक्ट स्पीच लिखणो डायरेक्ट जो ऐं तव्हां बिल्कुलु केयरफुल रहिजो त ॾिसो लफ़्ज़ टुमारो यूज़ थिया टाइम वर्ड
So it means there will be conversion as well. His hair was cut by a professional. And number 9 जो sentence आहे you active आहे या passive. 10 I haven't been to the countryside dash December. असां यूज़र डिस्कस कया आहिनि preposition में since, for, on and ॿिया बि. हाणे 3 options आहिनि A, B and C. So write in comment which answer is correct. And letter ज़रूर लिखजो the 10A and 10B. 11 odd one out. तव्हां last class में इस वक्त आप discuss कयो हुयो. Odd one out. Odd means strange or something which is different from others in the group. हाँ मां discuss detail में न कंदस छो तो ये तव्हां test आहे. A geometry, B algebra, C thermodynamics, D calculus. 12 identify the correct spelling. A etiquette, B etiquette, C etiquette, 4 etiquette. हाँ हिकड़ी spelling correct है. मां तव्हांखे hint ॾेई सघां थो ये वो etiquette आहे means सकना अक्सर माण्हू now you don't have etiquettes, manners. This is that word. So spelling are also important. Number 13 feminine gender of stallion is A mare, B cow, C hen, D E. हाणे तव्हां nouns पढ़िया उन में तव्हां genders पढ़िया different the masculine, feminine, common, neuter. ताकि mostly जेकी भी difficulty थी सके थी वो masculine to feminine थी सके थी. तो जेके असां यूज़ में ना आहिनि या जेके असांखे ना आहिनि ख़बर we need to be careful, we need to remember. असांखे सभु जेके genders आहिनि उहे यादि करणा आहिनि. So number 14 after the meeting I speak with my boss. हाणे A I speak, B I spoke, C spoken, D speak. 15 his pants dash torn during the match. A was, B is, C were and D are. Number 16 I said to him why don't you work hard. इहो बि तव्हां जो आहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर इंटरोगेटिव में ऐं इंपरेटिव में डिफरेंट रूल्स आहिनि जेके तव्हांजे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंट आहिनि. सो इन 4 आंसर्स आहिनि. A I asked him why didn't you work hard. B I asked him why he didn't work hard. C I asked him why he wouldn't work hard. D I asked why he was not working hard. 17 I ate a piece of chocolate cake. A active, B passive. Number 18 he has a strange hobby. Strange meaning क्या है या other word for strange or synonym. A particular, B unusual. 19 question the teacher said to the boys don't make a noise. हाँ इहो भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो काइंड आहे. हाँ हिते जेको आहे सो इम्परेटिव आहे. असां पढ़िया हुया डिस्कस कया हुया रिक्वेस्ट ऐं कमांड वारा सेंटेंसेस त उन्हनि मां इहो हिकिड़ो आहे. ऐं हिन में बि डिफरेंट रूल थींदो आहे जीअं तव्हांजे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. A the teacher ordered the boys not to make a noise. B the teacher asked the boys not to make a noise. C the teacher ordered the boys not to make a noise. D the teacher said the boys not to make a noise. अगर तव्हांखे थोड़ी हिंट हूंदी या तव्हांखे रूल्स यादि हूंदा you can easily do this. So इन करे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस ऐं ॿिया बि जेके टॉपिक्स आहिनि उन में तव्हांखे रूल्स रेगुलेशंस अचणु घुरिजनि. Number 20 her house is enormous. Enormous जो synonym चाहे या similar word चाहे. A huge, B must. Antonym 21 है. Antonym of dismay is A intimidate, B mitigate, C soothe, D hearten, E mystify. 22 antonym opposite of poverty is A wealthy, B guilty, C cold, D idle. 23rd there is a bridge dash the river. A through, B outside, C across. I hope तव्हांखे prepositions ईंदा हूंदा. difficult थी सघे थी पर after test in your test we cannot discuss right now. तव्हां जीअं मिस तव्हां डिस्कस कयो तव्हां WhatsApp ग्रुप में Facebook पेज ते असां करे डिस्कस करे सघो था. we will let you know that what are the answers. Or 24 my friend has been living in Canada dash 2 years. हाँ since for A since आहे B for. हाँ इन जो correct answer आहे according to use त किथे असां since use कंदा किथे for. Number 25 हाँ 25 is also very important. असां singular plural पढ़िया
जी बॉय बॉयज वो इजी आहिनि पर कुछ अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके इरेगुलर हूंदा आहिनि या जेके लैटिन वर्ड्स में हूंदा आहिनि सो वी नीड टू रिमेंबर दीज हाणे प्लरल ऑफ डेटम इज A datas, B data, C datums, D datum. And last is which one is correct? Which one is different? Sorry. Odd one out. A carpet, B picture, C rug, D welcome mat. And you here tanja questions जेके असां discuss कया. So inshallah शाम तव्हांखे result मिलंदो. And now I'm sharing answers. त तव्हां ॾिसो तव्हां केतिरा questions सही कया आहिनि ऐं कहिड़ी mistakes. And then inshallah we'll give result in the evening. Okay, so number 1 is five characters. D 2 joy A Kamal, 3 joy A he says that he does not want to play anymore, 4 joy impolite, 5th joy dull, 6 D least, 7 to DIN, 8 to CI Aslam told his mother that he was leaving for Karachi the next day. 9 to B आहे passive voice, 10 जो A आहे since, 11 जो C आहे thermodynamics, 12 जो C आहे etiquette, ये spelling हुई ETIQUEEE which is correct answer. 13 जो A आहे mirror, 14 जो B is oak, 15 C word, 16 B I asked him why he didn't work hard, 17 A acted, 19 assaulted. The teacher ordered the boys not to make a noise. 20th A huge, 21 is hearten, 22 wealthy A, 23 C across, 24 B 4, 25th I B data, 26 B pictures. You have tanja answers जेके असां discuss कया and I hope you understand these things. ऐं को क्वेरी तव्हां लिखो असां कोशिशि कई तव्हांखे सम्झायूं जेको असांखां थी सघियो वी ट्राई लेवल बेस्ट ऐं तव्हां व्हाट्सएप ग्रुप ते जॉइन कयो ऐं जेके असां पेज आहे कीप ऑन बी देयर पेज में रहो ऐं तव्हां रिज़ल्ट इंशाल्लाह शाम जो असां डिस्कस करे छॾींदासीं त इहो हुयो असांजो इंग्लिश जो मॉक टेस्ट एंड आई होप दैट इट वाज गुड टाइम ग्रेट टाइम विथ यू. Keep working, मेहनत कंदा रहो पंहिंजी पढ़ाई सां ऐं ॿियनि सां शेयर बि कयो. असां टाइम घटि आहे so we can do and take care of yourself. Allah Hafiz.